Now, with more and more black fungus cases being reported, the antifungal drug Amphotericin B now seems to be in short supply in different states. The drug is out of stock in most pharmacies. Most states have now floated tenders to procure the injection. India too is now ramping up production of the drug, but the shortage has only added to the woes of those who are recovering now from coronavirus. A dangerous rash, a rash that disfigures faces, can maim or even kill people. India is reporting rising incidence of mucormycosis or black fungus infection among COVID patients. A consequence of steroids that reduce immunity and increase blood sugar levels in critical coronavirus cases, more so in chronic diabetes. डायबिटीज़ जिसको भी है वो अपना कंट्रोल में रखे, वो वैसे भी अच्छा है, कोविड या नॉन कोविड। अगर हम इरेशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स करते हैं, टाइम से पहले देते हैं, टाइम से ज़्यादा देते हैं, फालतू में देते हैं, डोज ज़्यादा देते हैं, तो ये समस्या खड़ी हो सकती है, होती है। And the drug that treats this potentially fatal infection has flown off the shelves. The injection is out of stock in various medical stores across Uttar Pradesh. No active data of black fungus is available from the state, but pharmacies are reporting a spike in demand for the drug. अब दवा एक ऐसी चीज है कि ये दवा की इतनी सेल ही नहीं थी, उससे 100 टाइम इसकी सेल एकदम से बढ़ी, तो अब कंपनियों से रिक्वेस्ट की गई कि इसको जल्दी से जल्दी। In the meantime, the state government has formed a 12-member team to deal with the black fungus challenge and normalize drug supplies. This man in Madhya Pradesh has been looking for the antifungal injection for his mother since May 13, but without success. मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपये है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। Faced with shortages, the state government has sought 24,000 doses from the centre and sourced 2,000 from the drug makers. In India, Bharat Serums and Vaccine, Wockhardt, Abbott Healthcare, United Biotech and Cipla are the major manufacturers of Amphotericin B, which costs between 4,500 and 12,000 per injection. The centre has supplied 1 lakh vials to states to jack up supplies. Imports are also being explored. Maharashtra has floated tenders for 1 lakh injections. And Gujarat is reaching out to private companies to meet demands. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने देश के उन डॉक्टरों से जो कि इंटीरियर एरियाज में, रूरल एरियाज में और 2 टियर और 3 टियर टाउन्स में काम कर रहे हैं, बोथ कोविड और नॉन कोविड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे भी इंटरेक्शन किया। उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि म्यूकरमाइकोसिस जो कि एक नई समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करें, पर्टिकुलरली 2 टियर एंड 3 टियर टाउन्स में भी। For now, though, shortages persist even in the national capital. We are looking for a reality check at the RML hospital medicine shops that are these medicines available or not. We are talking to a few of the medicine shop owners. आपके पास क्या है एम्फोटेरिसिन बी का क्या सिचुएशन है? एक ही शॉप है, सिंगल है, नहीं है, सारे बताया ना आपको, 1 हफ्ते से नहीं आ रही। So what they are telling that these medicines, which are in fact antifungal medicines and are very important in the context of the black fungal disease, these medicines are now out of stock. The financial capital in Maharashtra is also impacted by black fungus and shortfalls of Amphotericin B. मेडिकल केयर सप्लायर्स जो हैं उनको कंपनियां, चूँकि पहले इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था तो उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही थी। अभी इस इंजेक्शन का ऑल ऑफ सडन लगभग सभी हॉस्पिटल्स में, आईसीयू हॉस्पिटल्स में इसका डिमांड है और उनके रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को आ रहे हैं, जिसके हिसाब से पहले मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, इसके लिए अभी वो गुड्स मार्केट में शॉर्ट हो गया है। An infection that has added to the woes of recovering coronavirus patients. When
asked, the top experts of the government have said that they don't have a full-scale data on the number of cases of black fungus being reported in the country. But they did say that it's not an outbreak yet, although the number of cases are large. But states have already pressed the panic button to say that there's a shortage of the drug that treats black fungus, which is also leading to mortality in many cases across the country.